Assalamu alaikum students, hope you all are doing good. Uh, this is to bring to you another session of this video. And if you can see, the session is regarding communicating the bad news or negative message, right? Okay, now what is writing negative message? Uh, Let me just share the slides. Okay, what are negative messages and why do you need the negative messages? देखो नेगेटिव मैसेज तो होते हैं बिजनेस में या we talking about communication, you have a lot of negative messages to share. लेकिन how to write that negative message, that's another art that you need to learn. ठीक है? For example, let's move ahead. Yeah, just bring it easy for you. This is the objective of this chapter. Apply the three-step writing process to negative messages. And again, this goes to strategy. We have to go and see what are the different things, right? Okay, using three-step writing technique, right? For negative messages. When you need to deliver bad news, you have five goals. Okay, the five goals that you need to keep in mind when you're having a negative news, that is, you need to convey the bad news, right? Whatever the negative messages, you need to convey it. For example, somebody did not got admission in a university, and university need to write it to the student that we cannot take you in because of your less marks, or you failed to score good marks. So that's a bad news, okay? But you need to communicate it in a manner that is professional and keeping in all the consideration. Again, to gain acceptance, to maintain as much goodwill as possible, to maintain good image for organization, and if appropriate, to reduce, eliminate the need for future correspondence on the matter, right? These are the five things you need to maintain when writing a bad news letter. Okay, let's take this example. This is a good one for you to understand. For example, uh, this one message is on the left and there's another on the right side. How do you buffer the bad news? This is very important. Now look over here. इन्होंने क्या किया है? They need to inform coffee station. They need to inform the employees that free coffee station on each floor are being removed to save money. This is the basic thing that you need to inform. ठीक है? So या तो आप पहले से ही bad news कर दो, ये हमारे जो सबसे गलत तरीका होता है, पहली लाइन में लिख दिया कि अनाउंस दैट द कॉफी स्टेशंस आर बीइंग रिमूव्ड। ठीक है, अभी बैड न्यूज़ पहले इस पर आ गई है, पहली लाइन पे बैड न्यूज़ लिखी है, फिर आप उसकी रीजनिंग लिखते हो। एक्सप्लेन चेंज इज अ पार्ट ऑफ एन एफर्ट टू हेल्प कंपनी अवॉइड टेम्पररी सैलरी रिडक्शंस ड्यूरिंग दिस स्लो इकोनॉमी। फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, देन give the positive angle, additional information and respectfully close. This is one way of it. What is the other way around? The other way around क्या है? आपने शुरू में बफर बात डाल दी, ठीक है, इसके बाद रीजनिंग डाली, फिर रीजनिंग डाली, बैड न्यूज बीच में डाली, और फिर पॉजिटिव एंगल एंड देन रिस्पेक्टफुली क्लोज. दिस इज मोर लॉजिकल वे ऑफ डूइंग द सेम थिंग. Now let's look at this. To inform employees that Triton project, one of the new products currently in development, is being cancelled. Now, first thing what they're going to write is that remind employees of the company's strategy of periodically reviewing cost and revenue projections for every new product under development. आप ये बताते हो इसमें भाई हमारी पॉलिसी है कि हम कोई भी नई प्रोडक्ट आती है तो उसको हम रिव्यू करते हैं कि कॉस्ट को और उसके इनकम जनरेशन को और उसको हम देखते हैं, और अपनी पॉलिसी के बारे में बता रहे हो, ठीक है। और इसके बाद बताओ कि मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है इस वक्त मार्केट में, उसके बाद बताओ मार्केट में नई कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, प्राइस इंक्रीज हुई है, और फिर अपनी बैड न्यूज बताओ. Explain that between these forces, the Triton project no longer looks like a profitable product for the company to pursue. तो आपने बताया भाई ये इस हालात के मद्देनजर we cannot do this project anymore and this is being cancelled. Now this looks pretty respectful way, ठीक है. Thank all the employees on the Triton team for the commitment and effort. These are two better ways. There are two comparison between the two ways. आपके सामने दोनों रख दिए हैं कि आपने किस तरह बैड न्यूज़ कम्युनिकेट करनी है. यहाँ पे कॉफ़ी की थी, यहाँ पे आपने कोई प्रोजेक्ट खत्म हो गया, एम्प्लॉयज़ को वो बताना है, ठीक है. सो यू सी द डिफरेंस हाउ यू राइट इट डाउन.
Now, writing negative messages, by writing clearly and sensitively, you can take some of this thing out of bad news and help you reader accept the decision, move on. ठीक है, मूव ऑन का मतलब है उसने बात समझ ली, अब वो आगे जिंदगी में बढ़ेगा, वो आपसे ग्रज नहीं करेगा, वो आपसे इंसस्ट नहीं करेगा, वो चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, if your credibility hasn't already been established with an audience, clarify your qualifications so listeners won't question your authority. अगर आप किसी अथॉरिटी के तहत लिख रहे हो तो अपना रैंक लिख दो या अपनी पोजीशन लिख दो ताकि उसको पता चले कि हु इज राइटिंग इट। अगर आप बैड न्यूज़ लिख रहे हो, यूनिवर्सिटी कंट्रोलर आपको लिख रहा है या डीन लिख रहा है या कोई एनी अदर पोजीशन इज देयर, तो यू हैव टू मेंशन इट ताकि वो आपको एक्सेप्ट करे कि भाई ये बंदे ने मुझे लिखा है तो इसका मतलब है देयर इज समथिंग वेरी कमिंग फ्रॉम वेरी फॉर्मल चैनल। ठीक है। When you use language that conveys respect and avoid an accusing tone, you protect your audience pride. किसकी बेइज्जती भी नहीं होती इस तरह। ठीक है, बंदे को मैंने बताया ऐसे आपने फेल हो गया, ही कैन नॉट टेक एडमिशन इन यूनिवर्सिटी, तो आपने उसकी टोन में ये नहीं बोलना कि यू आर अ लूजर और आपने जो ना यू कुड नॉट क्वालिफाई। तो आपने उसको बड़े माइल्ड टोन से बताना है। फॉर एग्जांपल, दिस ईयर वी रिसीव 5,000 एप्लीकेशंस और उसमें से भी शॉर्ट लिस्ट इज 200 एप्लीकेशन एंड पीपल हु हैड क्वालिफाइड 200, you were among one of the 200 qualified students, or this is another thing that we have accepted only first 100 students। ठीक है, so you still have a chance to apply for it in the next year if you wish to, and we hope success, we wish you a lot of success for your future endeavors। ठीक, इस तरह करके उसको बात कम्युनिकेट करनी है। ठीक है, एटिकेट के साथ ऑलवेज इम्पोर्टेंट, उसको स्पेशल केयर दी। ऑल्दो इट्स अ नेगेटिव मैसेज, लेकिन इसको आपने किस तरह देना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पीछे हमने देखा था इसको, एक और फ्लो चार्ट में समझाया। ठीक है, कि वो ये फ्लो चार्ट है, इफ यू कैन रिलेटेड, जो हमने बात पीछे करी थी उसी का फ्लो चार्ट है। एनालाइज सिचुएशन एंड मैसेज यू हैव टू डिलीवर। यूज द डायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट अपने नेगेटिव बात बता दिए। एंड इज दिस एन इमरजेंसी और डू यू नीड टू गेट समवन्स अटेंशन, देन यूज द डायरेक्ट अप्रोच। ठीक है, सीधी बात उसको बता दो। इफ नॉट, देन डू यू नो दैट ऑडियंस ऑलवेज प्रेफर डायरेक्ट अप्रोच, यस तो फिर आप बताओ। अगर नो है तो फिर अगेन, हाउ इम्पोर्टेंट इज इशू टू द ऑडियंस, इंपॉर्टेंस लो है तो फिर उसकी डायरेक्ट अप्रोच बता दो। इसकी इंपॉर्टेंस लो का मतलब है कि बंदा अगर इस खबर को सुन के बहुत ज़्यादा पोजेसिव है या ही इज़ वेरी मच टेकिंग इट टू हिज ओन ego वाला मसला ना बन जाए उसके लिए। कोई somebody may not somebody may risk his own life। ठीक है, सुसाइड कोई कर ले, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई, उसको बहुत हिट हो जाएगा। तो अगर वो है तो उसको डोंट गिव हिम डायरेक्ट न्यूज़, उसको लो है तब दे दो। हाँ, ये तो यूज इट इनडायरेक्ट अप्रोच। विल द न्यूज़ कम एज अ शॉक, यस तो फिर इनडायरेक्ट अप्रोच फॉलो करो। ठीक है, वरना नो तो फिर ये गिव अ डायरेक्ट अप्रोच। दोनों का अपना अपना फायदा है, दोनों का अपना अपना तरीका है। कंप्लीटिंग नेगेटिव मैसेजेस, नो व्हाट इज इन दिस। इसमें क्या करते हो, रिवाइज योर कंटेंट टू मेक श्योर एवरीथिंग इज क्लियर, कंप्लीट एंड कंसाइज। इवन स्मॉल flaws can be magnified in readers' minds as they react to your negative news। ठीक है, अब एक छोटे से वर्ड भी पकड़ के लो, दे कैन मेक यू रिएक्ट। ठीक है, और produce clean professional documents and proofreading carefully to eliminate mistakes नहीं करनी। एरर फ्री होना चाहिए नेगेटिव मैसेज। ठीक है, बिकॉज दे शुड नॉट बी एनी इम्प्रेशन कि केयरलेस एरर्स हो उसमें। और नेगेटिव मैसेज कैन मेक अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। आपने एक तो पहली बात बुरी बता रहे हो, उसमें इतने एरर्स हैं, आपने इतने प्रोन्स हैं, तो उसके लिए और मसला बन गया, उसके लिए वो दैट बिकम्स अ वर्स सिचुएशन फॉर हिम। ठीक है, फाइनली बी श्योर टू डिलीवर मैसेज प्रॉम्प्टली और टाइमली बता दो उस बात को। ज़्यादा लंबी बात को होल्ड करने का फ़ायदा नहीं। बैड न्यूज़ हमेशा फॉलो बता देते हो। ठीक है, और ये अनएथिकल भी होता है। किसी का एडमिशन नहीं हुआ आप उसको बता दें कि भाई ये नॉट क्वालिफाइड, ताकि दूसरी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दे वो। ठीक है, किसी एम्प्लॉय को आपने सेलेक्ट नहीं किया, बता दो उसको। किसी ऑर्गेनाइजेशन को आपने क्वालिफाई करवाना था, कोई आपकी बेस्ट डील थी, यू कुड नॉट go into that deal, please communicate it using direct approach for negative news। but negative message using direct approach opens with the bad news। ठीक है, मैंने बताया था कि डायरेक्ट अप्रोच में आपने पहली खबर बतानी है बैड न्यूज़ की,
तो इसके बाद क्या होता है, प्रोसीड्स फॉर रीजनिंग, फिर रीजनिंग बतानी है कि क्यों भाई आपको इस तरह किया है हमने। और एंड होता है इसका पॉजिटिव स्टेटमेंट में कि ठीक है, अच्छी बात है, यू कैन अप्लाई फॉर इट नेक्स्ट ईयर, और आपका हम दोबारा एडमिशन के लिए, योर डोर्स आर ओपन, आप कभी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, स्टेटिंग द बैड न्यूज एट द बिगनिंग कैन हैव टू एडवांटेजेस। ठीक है, एक तो फायदा कि शॉर्ट मैसेज होगा, अलाउज ऑडियंस टू रीच द मेन आइडिया ऑफ द मैसेज इन द लेस टाइम। ठीक है, बंदा डायरेक्ट बात पढ़ लेगा। ओपनिंग विद द क्लियर स्टेटमेंट द बैड न्यूज। ठीक है, अगर इसमें आपने चूज करना है इस अप्रोच को, तो यू हैव चूजन द डायरेक्ट अप्रोच टू कन्वे द बैड न्यूज, कम राइट आउट एंड से इट। ठीक है, मैंने बताया इसको डायरेक्टली बता दो। However, even if the news is likely to be devastating, maintaining a calm, professional tone that keeps focus on news and not an individual failure. जैसे मैंने बताया कि don't have to file out कि भाई आप बहुत नालायक हो इसलिए आपने ये काम नहीं किया, या आप बहुत ही कोई बुरे बंदे हो जो आपने pathetic परफॉर्म किया है। Don't have to write these personal statements. ठीक है, also necessarily remind the reader why you reading. Providing reasons and additional information. In most cases, follow the direct opening with an explanation of why news is negative. ठीक है, अब ये उसकी सारी और बातें चल रही, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू दिस। क्लोजिंग अ रिस्पेक्टफुल नोट, आपने एंड में जाके बताना है कि रिस्पेक्टफुली चेंज करना है। और ये इंडायरेक्ट अप्रोच का है। ठीक है, एज नोटेड अर्लियर, इंडायरेक्ट अप्रोच हेल्प रीडर प्रिपेयर फॉर बैड न्यूज। बफर क्या होता है, बीच में आपने कोई ऐसी बात डाल दी, ठीक है, जैसे हमने पता था कि न्यूट्रलाइज हो बंदा, वो उसकी आपने जनरल बात कर दी ताकि मेन बात पाने से पहले आपने कोई चीज़ डाल दी। बिकॉज जैसे मैंने कहा, लास्ट ईयर वी रिसीव्ड 5,000 एप्लीकेशंस। ठीक है, ये बफर न्यूज़ है, रिजेक्शन से पहले आपने डाल दी। ठीक है, एंड दिस ईयर वी रिसीव 7,000 एप्लीकेशंस, का मतलब है कि इनटेक बहुत ज़्यादा हो गया हमारा, तो हमने इसलिए रिजेक्शंस किए। वी जस्टिफाई योर सेल्फ। Continue with a clear statement of bad news. After you've thoughtfully and logically established your reasons and readers are prepared to receive the bad news, you can use three techniques to convey the negative information as clearly as kind possible. First, make sure you don't overemphasize bad news. Overemphasize bad news को नहीं करना होता, but simply have to say it. Second, if appropriate, use a conditional if or when statement to imply the audience would have received or might someday receive. वही वाली बात बताएं कि if you can apply next year, you can also get admission in this university. If वाली बात आ गई, if you apply for this job, we are always open. ठीक है, you can come again with better grades. इस तरह का क्या आप उसको बताओगे। Third, emphasize what you can do or have done rather than you cannot do. ठीक है, you can retake the SAT exam with better score and then apply to us again, and we are open to your admission. इस तरह करके आपने बात उसको बैड न्यूज बता दी, इसको एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन उसको बताया कि भाई आप सैट का एग्जाम दे दो दोबारा, और तो हम आपको दोबारा कंसिडर कर लेंगे। अवॉइड अनसर्टन कंक्लूजन, मैनेज फ्यूचर कॉरस्पॉन्डेंस। ठीक है, वी आर ऑलवेज ओपन टू यू, इस तरह करके आपने बात लिखनी है। मेकिंग नेगेटिव अनाउंसमेंट्स ऑन रूटीन बिजनेस मैटर्स, इसमें क्या होता है, many negative messages written in response to requests from an internal external correspondent, but on occasion manager needs to make unexpected announcement of a negative nature. ठीक है, although such announcements happen in normal course of the business, they're generally unexpected according to except in the case of minor changes. अब इसमें क्या होता है, नॉर्मल अनाउंसमेंट जो बिजनेस में आप करते हो, लाइक मैंने बताया आपको बिजनेस में कोई प्रपोजल है, आपने आपने रिजेक्ट कर दिया, उसमें कोई बिजनेस प्रपोजल आया था, कोई आइडिया आया था, तो यू हैव टू राइट इट डाउन कि भाई दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस, दिस प्रोजेक्ट इज प्रपोजल रिजेक्टेड टू अस, वी और हमने इसमें बड़ा थॉटफुल अंदाज से उसको सोचा, बट दिस नॉट मैच विद व्हाट आवर बिजनेस रूटीन है। ठीक है, हैंडलिंग बैड न्यूज अबाउट ट्रांजेक्शन्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बैड न्यूज अबाउट ट्रांजेक्शन ऑलवेज अनवेलकम एंड यूजली अनएक्सपेक्टेड। व्हेन यू सेंड सच मैसेज यू हैव थ्री गोल्स। ओके, modify the customer's expectations, explain how you plan to resolve the situation, repair whatever the damage might have been done to business relationship. अब इसमें किसी का चेक आपने लिया था, it did not got cleared, ये हो सकता है। ठीक है, तो उसमें आपने इस तरह की चीज़ों में डैमेजेस भी, जैसी बात है, आप पे पेनल्टीज लगेंगी या उन पर लग गई, इसको ज़रा तरीके से लिखना होता है। रिफ्यूजिंग क्लेम्स एंड रिक्वेस्ट फॉर एडजस्टमेंट्स, किसी ने आपको वारंटी का कहा कि भाई ये वारंटी मेरी क्लेम करें, आपने पता ही नहीं हो सकती क्लेम, तो आपने उसको बड़ा तरीके से जवाब देना है। ठीक है, दैट्स रिफ्यूजिंग अ क्लेम। कस्टमर्स हु मेक अ क्लेम और रिक्वेस्ट फॉर एडजस्टमेंट टेंड टू बी इमोशनली इन्वॉल्व, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार आप उनको दोगे, कोई लिवरेज दोगे, लेकिन अगर आप नहीं देते तो प्लीज हैंडल द सिचुएशन वेरी केयरफुली।
एंड बी श्योर टू रिस्पॉन्ड क्विकली, क्योंकि इसमें पे सोशल मीडिया पे या पब्लिक कंप्लेन में ज़्यादातर मुझे तो लोग वहाँ डाल देते हैं। सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी सेंडिंग नेगेटिव एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड मैसेज। ये नेगेटिव एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड मैसेज मैंने बताया कि आपको हमने सेलेक्ट नहीं किया, ये उससे रिलेटेड होता है। डिफ्यूजिंग रिक्वेस्ट फॉर रिकमेंडेशन लेटर्स। कोई रिकमेंडेशन लेटर मैनेजर को लिखता है कि भाई मुझे रिकमेंड कर दो, क्या आई वॉज अ गुड एम्प्लॉय, तो आप उसको स्विफ्टली ये प्रॉपर पॉलिसी के तहत कह दो कि भाई दिस इज नॉट अ पॉलिसी, है इस तरह करके कि you have been a good manager in the past, but it is goes against our policy. Don't give recommendations. Again, सोशल मीडिया की रिकमेंडेशंस की रिक्वेस्ट आप मना कर सकते हो कि वी डोंट गो ऑन सोशल मीडिया। रिजेक्टिंग जॉब एप्लीकेशन, ये वही हमने की बात अभी कि भाई वी डोंट फॉलो डिस्क्रिमिनेटरी एंड वी आर इक्वल टू जेंडर एंड ऑल दिस, ठीक है, ये सारी बातें आपने लिखी और फिर वाले इसको आपने रिजेक्ट किया। परफॉर्मेंस रिव्यूज आपने लिखा कि भाई परफॉर्मेंस वाज नॉट अप टू डेट दिस ईयर, ठीक है, तो उसकी नेगेटिव न्यूज़ आपने देनी है, वो भी आपकी नेगेटिव मैसेज आता है। या फिर टर्मिनेट समबडी फ्रॉम एम्प्लॉय, ये वाला भी इसमें क्या करते हैं, किसी को जॉब से फायर करना है, एम्प्लॉय if an employee performance cannot be brought up to company standard, or if some other factors like declining sales and all that, ठीक है, तो आपने इसका पूरा नेगेटिव मैसेज बना के देना है। टर्मिनेटिंग मैसेज शुड ऑलवेज बी रिटन विद इनपुट फ्रॉम द कंपनीज लीगल स्टाफ, बट हियर आर जनरल राइटिंग गाइडलाइंस। इसको कैसे लिखते हैं? क्लियरली प्रेजेंट द रीजन फॉर दिस डायरेक्ट एक्शन, whether if the employee's performance or business decision unrelated to performance, ठीक है, आपने बिल्कुल साफ और सादे अल्फाज में बताना होता है कि व्हाट वाज हिज एक्शन और परफॉर्मेंस क्या थी इसकी और बिजनेस किस तरह अफेक्ट हुआ इसकी परफॉर्मेंस से, ठीक है। मेक श्योर रीजंस आर प्रेजेंटेड इन अ वे दैट कैन नॉट बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है। फॉलो कंपनी पॉलिसी, पर्सनल अटैक नहीं करना, इंसल्ट नहीं करना। आस्क अनदर मैनेजर रिव्यूज टू, एक बार पढ़ा दो किसी और मैनेजर से ताकि उसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी है तो वो देख लेगा। डिलीवर टर्मिनेशन लेटर इन पर्सन इफ ऑल पॉसिबल, ठीक है, और अरेंज अ मीटिंग दैट विल इंश्योर प्राइवेसी एंड फ्रीडम फॉर इंटरप्शंस। तो कोशिश कर दो कि टर्मिनेशन लेटर्स जो होती हैं उसको आप बाय हैंड देते हो इन पर्सन, ताकि यू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ द पर्सन। Important points to consider when conveying a negative or emotional news. As a manager, business owner, you may at times need to issue negative announcements regarding some aspect of your product। प्रोडक्ट के बारे में आपने बताना है कि हमारा ट्रायल प्रोडक्ट था, इसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो अगेन these are all negative messages। और unroutine negative message announcements क्या होते हैं, involve significant changes that negatively affect one or more groups, ठीक है। When making negative announcements, follow these guidelines. Match your approach to situation के साथ अपनी approach को match करो। Consider unique needs of each group. Minimize the elements of surprise whenever possible. If possible, give yourself enough time to plan and manage a response. Look for positive angle, but don't exclude false optimism. False optimism क्या होता है कि आप किसी को झूठी तारीफ दो या झूठी तसल्लियाँ दो, ये नहीं करनी है आपने। Use multiple media to reach out to funded news and be open and transparent. Responding to negative information is in social media environment. For all the benefits they bring to business, social media and other communication technologies have created a major new challenge. अब कोई रूमर चल रहा है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन चल रही है, आपकी कंपनी को अटैक कर रही है, तो उसके लिए क्या करना है आपने? यू हैव टू फॉलो 4 स्टेप्स। अर्ली, engage early, engage often, monitor the conversation, evaluate negative messages, respond appropriately। के इलेक्ट्रिक के बारे में लोग लिख रहे हैं बुरा भला, जैसे फॉर एग्जांपल, तो यू हैव टू इंगेज क्लियरली। आपने मॉनिटरिंग टीम बना दी, वो देखती रही कहाँ कहाँ पे हमारे कौन बंदे हैं जो नेगेटिव मैसेज कर रहे हैं, उनको इवेल्युएट किया, उसको फिर आपने नेगेटिव मैसेज को देखा भाई किस चीज़ के बारे में हमारे वो कर रहे हैं बुराई, तो उसको आपने रिस्पॉन्ड किया प्रॉपरली, अप्रोप्रिएटली, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है, एक्सप्लेन हाउ टू यूज इनडायरेक्ट अप्रोच इफेक्टिवली व्हेन कन्वेइंग नेगेटिव न्यूज़। ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन हाउ टू व्हाट एथिकल प्रॉब्लम यूजिंग दिस अप्रोच, ठीक है। इनडायरेक्ट अप्रोच में आप क्या मसले आ सकते हैं? एक्सप्लेन हाउ टू यूज इनडायरेक्ट अप्रोच, पहले तो किस तरह इसको यूज करना है नेगेटिव मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए। इनडायरेक्ट हम अप्रोच हमने सॉरी पढ़ा था कि पहले आपने मैसेज नहीं देना, मैसेज बीच में आएगा, पहले इनडायरेक्ट बफर आएगा, फिर एक्सप्लेनेशन आती है, फिर इस तरह करके जो हमने किया था। डिस्क्राइब सक्सेसफुल स्ट्रेटजीज फॉर सेंडिंग नेगेटिव मैसेजेस ऑन रूटीन बिजनेस मैटर्स, ये हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है। आई होप दिस वाज अ quite a healthy learning part from you. Or if there are any question you want to ask, you can always comment and ask those. ठीक है, thank you.